Lately, I've realized that my days off really go into just doing and keeping up with the house and errands and everything else. I need to start planning them better because I feel like I don't get time for myself on my day offs. But हाँ धीरे धीरे हो नहीं पा रहा है and it's one of those days where I have to reset the whole house. I was not here for 4-5 days and उसके बीच में आंधी आ गई है, बारिश आ गई है, AQI 300 तक ड्रॉप हो गया है. पहली बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी सांस लेने में आ रही है. बट yeah, we have a reset day. And also something which I've realized now living by myself, that you need to have these pockets during your day where you don't leave everything for a single day. At least that's for me. Like I would like to enjoy my weekends outside, go get coffee, watch a show or something, and not just do the housework. So, because if I do it all at once, it would take me like 3 hours, right? Cooking, cleaning, laundry, my errands outside, whatever it might be. But with that said, आज का दिन तो almost major chunk of it is just going to go into resetting my home, doing laundry, cooking food, and for the week, and yeah, just keeping up with everything. And then I will probably have a lower back pain, so I have to lie in bed with a hot pack for the rest of the day. So also, this is my fourth time posting consistently in a month, I'd say. ओरिजिनली मैंने कुछ और वीडियो बनाने का प्लान किया था विच वॉज रिलेटेड टू क्यूरेटिंग आर्ट एंड पुटिंग आर्ट फॉर माई स्पेस, बट बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल हो नहीं पाया एंड आई वॉज नॉट हियर, तो आई डिसाइडेड दैट वाई नॉट आई टेक यू एंड थ्रू अ रीसेट एंड लेट्स पुट द home together. Next one will be curating the art, but for me it's a big deal, right? Like this is the most consistent I've been with and I want to continue that. I'm actually enjoying it a lot. Not gonna lie, I really look forward to it. I've also been looking at videos where I'm like, how do people really walk their viewers through a video? And all of them talk a lot. माई इनसिक्योरिटी विद माई टॉकिंग इज़ दैट एक तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे लगता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, माई ग्रामर इज़ इनकरेक्ट विच इज़ इनकरेक्ट, एंड ना तो मुझे हिंदी बोलना आता है ना मुझे इंग्लिश बोलना आता है, एंड आई मीन दैट बिटवीन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड I feel like I stutter also a lot, or like there's too much saliva in my mouth. I don't know. There's just so many things. So I've always avoided talking to the camera, and also because I've gained 4 kgs after coming here. So of course I'm like a bit like I don't want to be on the camera, and maybe मैं नहीं बोलती हूँ, but I'm going to take this seriously. So regardless, okay, this is who I am and this is what my life is like. So I can't really say about what people will judge about me, but at least मुझे तो अपने आप को judge करना बंद करना पड़ेगा to actually take this seriously, because I love doing this. I really 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 enjoy doing this. बोल तो मैं सकती हूँ, याप भी मैं कर सकती हूँ. It's just that I don't go overboard. Let's get to the झाड़ू पोछा and let's start with the laundry. Also get some sunlight क्योंकि धूप निकली हुई है, एंड लेट्स गेट टू द डे. मेरे पौधे चल ही नहीं रहे हैं यार, सारे मर गए हैं. एक ये है, देन ये दोनों हैं, ये भी मरने लग गए. लाइक मैं एक मॉन्स्टेरा भी नहीं चला सकती. दे आर लिटरली द ईजीएस्ट प्लांट टू ग्रो. टचवुड, आई थिंक ओनली दिस फिग इज ग्रोइंग वेल. Maybe because I've like completely ignored it, I've like not watered it, and like, but the most exciting part is this plant here which is growing a new leaf. Let me show you more. These plants are in my other balcony, and ये भी पता नहीं क्यों I was supposed to keep them in the sun. I kept them in the sun and अब नहीं कर रहे. like क्या उजाड़पन है ये. एरिका पाम तो आई हैव गिवन अप, ये भी जा चुका है. These two also, this it was just so lush green when I bought this, and now it's gone. प्लांट्स में या तो मुझे खाद डालनी पड़ेगी, मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो क्यों मर रहे हैं. बट मे बी किसी ने मुझे कहा था कि सर्दियों में पौधे नहीं चलते हैं ज़्यादा बिकॉज इट्स जस्ट टू कोल्ड फॉर देम एंड द टेम्परेचर इज हार्श फॉर देम, एंड प्लांट्स लाइक monstera, एरिका एंड ऑल आर वेरी ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स. सो हो सकता है इसलिए, बट आई एम नॉट गेटिंग प्लांट्स नाउ फॉर अ वाइल.
जब तक हल्की सी गर्मी नहीं आ जाती है, बिकॉज यार एलोवेरा तक नहीं चला मुझसे, लाइक उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए हो. दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉट. द लाइटिंग इज़ रियली नाइस हियर. बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग वी नीड कॉफ़ी एंड वी नीड फूड. नाउ ऑन द डे ऑफ आई विल मेक पोहा एंड माई कॉफ़ी. पोहा बना लेते हैं पहले, वो खा लेते हैं, गेट सम एनर्जी एंड देन लेट्स वर्क द रेस्ट ऑफ द शिट आउट. लाइक यू सी राइट, क्लोथ्स आर देयर, किचन क्लीन करनी है. काम ठीक हो ही नहीं. So the whole of New York right now is in like a snowstorm alert or something, and it's just like snowing crazy. And even though when I was there, I didn't see this much snow. I've never seen this much snow, but it's like covered. Like people are literally playing in Central Park. Like I don't know. Yeah, it's focusing. Look at that. That's so crazy. That's so crazy. And yeah, my friends have sent me images. It's just like snowing so much, so hard, and like people are like snowboarding, they're playing around, they're throwing snowballs. So but that एक दिन की चांदनी है ये. When the storm will pass and the snow will settle in and it start melting down, बिल्कुल इतना कीचड़ कीचड़ लगता है, नहीं कर सकते. One thing that I really miss here about winters there though is central heating. Central heating. ही फेंकने के लिए। मुझे जुकाम हो गया है। अब मेरे अंदर ये जमाने की आज पर हिम्मत नहीं है। लेट्स हैव अ बिग बोल ऑफ हॉट पास्ता। पूरा ही गर्म कर लूँ, ज़्यादा नहीं हो जाएगा।
ठीक है, I can always put it back. इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं फलाफल हमस और पीटा बनाऊंगी बिकॉज आई रियली लाइक इट एंड आई मिस इट. आई हैवंट हैड इट एवर सिंस आई मूव बैक. सो आई वाज लाइक कि ठीक है मैं बना के रख लूँगी, विल प्रेप इट, इट्स रियली ईजी टू डू. बट बैटरी लो हो गई है, आज नहीं हो सकता. लेट्स डू इट टुमारो और मे बी वन ऑफ द डेज आफ्टर वर्क, क्योंकि मुझे छोले वगैरह भी गलाने पड़ेंगे उसके लिए. आई हैव टू सोक द चिकपीस. सो यप, I thought this vlog was going to be more interesting honestly कि just मेरा पूरा दिन, but I think now I'm just going to go sit in bed because I can feel that I'm about to get sick. My nose is runny and I just don't want to make it worse. The weather is not really the best and तो सबसे तुक की बात एंड इंटेलिजेंस की बात ये होगी कि हीटर के सामने चादर ओढ़ के, रज़ाई ओढ़ के और बैठा जाए और कोई मूवी देखी जाए. There's some sort of a vacation movie on Netflix which I'm thinking कि वो देख सकते हैं. Sometimes I feel like कि adulthood में जब तक आप बीमार नहीं होगे, and I've noticed this with my friends also, तब तक you just don't slow down. Like everything that you know is important and of urgency. Like घर से नहीं साफ़ करोगे तो घर गंदा होगा, काम नहीं करोगे तो बैकलॉग हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें. एंड समटाइम्स गेटिंग सिक सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ वे ऑफ अच्छा ठीक है टू स्लो डाउन योर बॉडी. हमें आईफोन का स्क्रीन गार्ड भी बदलना है. What should I watch? You know what? Let's improvise. Sorry. एक आइडिया था मेरे दिमाग में because I don't have like a TV or a console, right? Or I also don't have a bed table or a table where I can just place my laptop and just like watch movies on it while it not being on bed, because I also have really bad severe neck pain. तो एक सेकंड में माइक तो ऑन है ना. सिवियर नेक पेन, तो इधर उधर अगर करके रखूँगी तो देन मेरी नेक वहीं लॉक हो जाती है. आई हैव आइडिया, अभी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. So my idea is to place my iron board here and let me change its height. जब तक टीवी कंसोल नहीं आता है तब तक this has to do. And I have my mouse, so I can like play the movie from here. Okay, this is lovely, love it. I'm watching this K-drama called Pro Bono, so I'm just gonna continue watching that. 무슨 일 있었어? Okay. 이 정도 사건에 대검 중수 검사 출신. 이 정도 사건이라니. I finished the second, like the first 2 episodes. I watched one yesterday and I finished one now. People put anti-bark collars on dogs. Like, what is wrong with this world? The fight, the argument, the lawyer arguments are really nice. Korean dramas, I do like Korean dramas a lot. Pretty much watch every Korean drama out there. Now that I'm in bed only, I have to order groceries, I have to cut my nails, and I have to change the screen protector of my phone. So let's do that. Okay. No damage on the screen, right?
let's build this Lego. I got this from New York. अभी तक बनाया नहीं है. This has been sitting on my coffee table. I want to make this taxi and keep it on my coffee table, and it's going to be just, you know, my daily touch with New York. And not that I use yellow taxis so much. I think I only used them once actually, when I first got off at the airport and I was going to my place, and I realized how expensive they were, and Ubers were much cheaper. So yeah, this is a nice souvenir. 가출 청소를 먹기 위해서? 그걸 듣다가 세상 생각이 든 건데. 사실 수민 씨는